Hi there, I welcome you all to my channel Fluent Odisha. This is me Rudra Dharwa. Today I have brought 20 types of phrases and idioms to enrich your English, guys. You know that I always bring such type of valuable contents for you so that you can also make your English strong and beautiful, guys, because we are not going to only speak in that basic way, in that simple way, but sooner or later we have to enrich our English. We have to make it more impressive and professional, guys. So due to that, today I have brought here such type of phrases and idioms which will definitely help you guys to enrich your English. So watch this video till the end. Today I'm going to explain these all in Odia language, guys, so you can easily understand it, and you can, after watching this video, you can also start using in your English, guys, and definitely that time only you can realize how beautiful it will be looking, guys. So now I will not tell you to subscribe to my channel, but in the end of the video, if you will find it valuable and informative, then only you can give a like and subscribe, but not right now. Okay, let me tell you here something in Odia. So देखो आमे बहुत बेसिक वर्ड्स गुड आम डेली लाइफ रे इंग्लिश रे यूज करि थाउ, किंतु आम इंग्लिश टा गोटे एडवांस्ड करिया पई आ गोटे फॉर्मल करिया पई मु किछि एठारे फ्रेजेस आ इडियम्स गुडी को आनी छि जो गुडी को कि बहुत हेल्प करिवो तुम इंग्लिश रे भी। देखो मु जदि ऑनेस्टली जे शेयर करि मोडे खाता रे लिखितिली, सेटा मु बधे 2023 रे लिखितिली, किंतु एबे मु तुमको शेयर करछि काहे मु भी केबे माने भाबिलिनी जे तुम सहित किछि वर्ड शेयर करबे, खाली तुम ब्लॉगिंग वीडियोस गुडी को बनाउथिले, बट आज थारो तुम बहुत किछि एमती वर्ड्स वीडियोस आ एमती इंपोर्टेंट जिंसो देखि पारिबो मो चैनल रे। तो चलो बोरिंग करिया के मु तुमको चाहूनी वीडियो टू स्टार्ट करबा। तो एठार जेम तुम देखि पारथो, एज यू कैन सी हियर आवर फर्स्ट फ्रेज इज ऑन पर्पस। ऑन पर्पस, ओके, ऑन पर्पस मींस जानी सुनी। सिमिलर वर्ड्स गुडी भी बछि जेमति नोइंगली, इंटेंशनली, बट ऑन पर्पस माने जानी सुनी। लेट्स मेक अ सेंटेंस। से जानी सुनी मते दुख करेला। ही मेड मी सैड नोइंगली, और ही तापर मु जदी आउडे कहबे से जानी सुनी यहा कला। ही डिड इट ऑन पर्पस। ही डिड इट ऑन पर्पस। आमर सेकेंड वर्ड होचे कीप इन माइंड। कीप इन माइंड माने मनरे किछि रखिबा। सपोज मु एबे तुमको ए गुडियो कहूची, तुम कहबे एक सब वर्ड्स गुडी को मन रखो। कीप इट इन योर माइंड। कीप इट इन योर माइंड। तापर हमर थर्ड वर्ड होचे ऑल ऑफ अ सडन। एटा को ए भी प्रोनाउंस करबो, ओ भी प्रोनाउंस करि पारे, बाकी नेटिव स्पीकर माने याको अ प्रोनाउंस करें तो अ करिवो। ऑल ऑफ अ सडन मींस हठात, जोटा कि हम सडनली कहू, स्पॉन्टेनियसली भी कहू, तो अनएक्सपेक्टेडली भी कहू, तो सेठी तमे ऑल ऑफ अ सडन कहि पारिबो। जेमिति गोटे एग्जांपल जदि हम नेबा, से हठात सेठा को गला। ऑल ऑफ अ सडन ही वेंट देयर। ऑल ऑफ अ सडन ही वेंट देयर। देखो एटा प्रोनाउंस को वेंट कहा जाय ना, मु किंतु वेंट प्रोनाउंस करनी। ही वेंट देयर। ही वेंट देयर। Okay, in this way you can also pronounce, but in the beginning you cannot pronounce it by the way, you have to practice. हमर नेक्स्ट वर्ड हेउची so far। so far माने ए पर्यंत, जोटा कि हमर गोटे कंजक्शन भी होची till now। till now माने भी ए पर्यंत। से ए पर्यंत आसी नाही। से ए पर्यंत आसी नाही। he has not come so far। he has not gone there so far। से मते ए पर्यंत कहिनी। he has not told me so far। so far, not so far, not far, so far, so far। make this R silent। और 5 नंबर वर्ड होची एट ए ग्लांस। एट ए ग्लांस मींस गोटे नजर रे। सपोज मेटी वीडियो बनउची, तो मते केबे नेचुरली फेस टू फेस देखिनो, तो मु तुम मार्केट रे बुलुची, तुम एरिया रे बुलुची, तापर मते गोटे नजर रे चिन्हि जिवो। ओके, तो सेठी हमरे कहि पारियो मो रुद्र धारवा को गोटे नजर रे चिन्हि गले। आई रिकॉग्नाइज्ड मिस्टर रुद्र धारवा एट ए ग्लांस। ओके, एट ए ग्लांस। इन दिस वे यू कैन मेक। तमर 6 नंबर वर्ड होची इन ए मैटर ऑफ सेकंड। इन ए मैटर ऑफ सेकंड माने सही समय एटा बहुत जल्दी गोटे जिंस माने कहि पारिबो। से सेम सेंटेंस टा हम गोटे जदि नेबा, मु त गोटे मुहूर्त रे चिन्हि देली। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम इन ए मैटर ऑफ सेकंड। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम इन ए मैटर ऑफ सेकंड। सेफ एंड साउंड याको प्रोनाउंस करबने सेफ कहबने हला। सेफ
सेफ एंड साउंड सेफ एंड साउंड मीन्स होचे भलो भावरे ओके जेमति कि मु कहबी तुम भलो भावरे घर को पहुंच reach your home safe and sound okay reach their home safe and sound all right in this way you can use अब हम सेफली भी डायरेक्ट यूज कर दो भलो भाबरे पहुंचलो did you reach to your home safely so in that case you can use this safe and sound as well amaro next what होची scare the hell out of someone scare the hell out of someone जगरे जे डरिबो से आसीबो एटा मु हे पारे से पारे जे भी पारे सपोज से मते डराई देला हठात डराई देला so say case रे मु कहि परबी you scared it the second form आसीबो you scared the hell out of me एटा मी मु डरिले ना मी आसीबो you scared the hell out of me तापर मु जति के मु तुमको माने हठात डराई देली I scared the hell out of you I scared the hell out of you हमर नेक्स्ट वर्ड होची जोटा बहुत कॉमन मो फ्रीक्वेंटली यूज करे मो इंग्लिश रा बहुत इंप्रेसिव भी लागे सेडा होची have a word with instead of saying कहिबा बदले जो टॉक स्पीक कहिबा बदले तमे जदी एडा कहिबो have a word with बहुत फॉर्मल लागे बहुत एडवांस भी लागिबो मु तम सहित किछि समय କଥା हेबा को चाहूची I want to have a word with you for some time I want to have a word with you for some time ए परि भाबरे हमर नेक्स्ट वर्ड हेउची from scratch means from the beginning माने पूरा आरंभ करो start it from scratch begin it from scratch okay in this way you can use it very useful you can remember and you can also start using हमर नेक्स्ट वर्ड हे होचे देखि पा तो डे इन डे आउट माने तो गोटे सेंस पाई जायते जे राती दिन तो जदि जने राती दिन गोटे जिनसोडा करूचे तो सेही टाइम रे तमे ए डे इन डे आउट यूज कर पार मु राती दिन परिश्रम करे I do hard work day in day out I do hard work day in day out our next what होची in a nutshell माने जोटा हम यूज करू ब्रीफली माने छोटो ये रे छोटा आंखे रे ब्रीफली संक्षिप्त रे चेष्टा करो याको संक्षिप्त रे कहिबा पई ओके try to explain it in a nutshell okay try to explain it in a nutshell ए बरि भाबरे जो ब्रीफली बदल रे याको तुम यूज करि पारिबो बहुत भल लागिबो हमर नेक्स्ट वर्ड होची राउंड द क्लॉक ए या से तो सिमिलर है जो डे इन डे आउट 24 घंटा डे इन आउट जो राती दिन 24 घंटा ओके मते ताहा पाइया पई राती दिन पढिया को पडिला I had to study round the clock to get that I had to study round the clock to achieve that हमर 14 नंबर वर्ड हेउची सूनर और लेटर बहुत यूजफुल वर्ड मु मोर रेकमेंड करू छी गाइस एको मने रखो तमो इंग्लिश रे भी तमे यूज करा पे ट्राई करो काना बहुत एमदी सेंस आसी थाए जेते बेले के बने पारी न थाओ बहुत कंफ्यूज होइता ओके मोस्ट ऑफ द केसेस इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज वी गेट सच टाइप ऑफ वर्ड ओके सिचुएशन टू यूज बट बिकॉज़ ऑफ नॉट हैविंग दैट exact word to use we get confused that time but after watching this video your doubts will be cleared by me sooner तुम केबे ना केबे तो सेठा को जीवो sooner or later you'll go there sooner or later you'll go there मु कहूनी you will go there कहूनी you are will को contraction है you'll go there sooner or later you'll tell me something केबे ना केबे तो मते तुमे ता कहइबो जेमते गोटे डायलॉग होचे केबे ना केबे तो तुमे ता पाक को जीवो कोन कहइबो गोटे किछ से कायमत मूवी रे sooner or later you will go there what will you tell her will you tell that you are a criminal and day in day out you are spending your time in the jail will you not do something which you can proudly say yeah I did something in this way yeah I think I made a mistake here but in this way that Sunil Shetty said so guys if you have watched this video till now then I'm so grateful to have you here on my channel guys so thank you so much for that and now I'm going to cover more how many yeah more words okay so words and keep learning guys our next word होची guys बदल रे instead of हिंदी कहया बदल रे इंग्लिश कहो हिंदी कहया बदल रे इंग्लिश कहो instead of speaking Hindi speak English instead of speaking Hindi use English ताको पिटवा बदल रे याको पिटो instead of beating him beat him or instead of giving him give her ताको देवा बदल याको दियो in this way
ଆମର ନେକ୍ସଟ ୱାର୍ଡଟି ହେଉଛି ଯୋଉଟା ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ ସବୁବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଲଗେଇଥାଉ ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ବା ସବୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ମୁଁ କେବେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଆଇ would like to thank you all ଆଉ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି in the first place I would like to tell you one thing okay in the first place ମାନେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ତାପରେ like a fish out of water ବହୁତ ଭଲ idiom ଟେ ଏଟା देखो मोटे गोटे हिंदी रे ओडिया रे वर्ड पाइलेनी बाय द वे किछि सर्च टे करिनी त तरसना जेमती गोटे माछ पानी बिना जेमती से फील करे से हिसाब रे ए जो इडियम टा बनि छी आम पाई मु जदि कबे गोटे झियर गोटे एग्जांपल ले न झियर ना माने गोटे इंग्लिश पाई इंग्लिश बिना मु तरसी जाए ओके तो सेही टाइम रे कहबे विदाउट इंग्लिश आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर विदाउट इंग्लिश आई फील like a fish out of water तुम भी एमती यूज करबे जेमती गोटे झियर जति नै छी हां तुम बिना मु पूरा गोटे माछ जेमती पानी बिना जेमती हुए मु सेमती जाय विदाउट यू आई आल्सो फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर तापर मन नेक्स्ट व्हाट हेउची ओवर एंड ओवर इंस्टेड ऑफ सेइंग अगेन एंड अगेन से अगेन एंड अगेन कहबा बदल रे ओवर एंड ओवर यूज करो तुम बारंबार से गोटे टे कि काहे कहउछो why are you telling the same thing over and over again why are you saying or why are you telling the same thing over and over again तो एही बेर over and over तापर again टाइप यूज कर पारिबो तापर गोटे इंटरेस्टिंग वर्ड है turn a deaf ear to turn a deaf ear deaf no deaf माने जानिछो माने काला our next word होचे turn a deaf ear to माने तापरा जे आसीबो ऑब्जेक्ट ध्यान न देबा तुमे मो कथा को केमती ध्यान देलो नाही how come you turned a deaf ear to me how come you turned a deaf ear to me माने एमिति केमती तुमे मो कथा को ध्यान देलो how come माने एमिति केमिति okay in this way you can use तापर नेक्स्ट वर्ड टी होची keep an eye on माने ध्यान रखिबा जेमते कि तमे कोठी उडो छ किछि रखि दर जणो कहबो किछि समय पे के ध्यान रखो कीप ऑन ये हियर इज माय बैग मो बैग एठार छ किछि समय पे के ध्यान रखो हे हियर इज माय बैग सो प्लीज कीप ऑन आई ऑन माय बैग तापर नेक्स्ट वर्ड हेउची अ कपल ऑफ माने गोटे रे दुई थिंग्स हो बा हमर के जिनिस सब माने थिंग्स गुडी को हो बा केहे भी हेई तांतो मु सेटा गोटे बा दुई दिन परे जेबे after 1 or 2 days कहया बतडा हमें a couple of जदी कहबा बहुत भलो बा I'll go there I'll go there after a couple of days okay I'll go there after a couple of days हमर नेक्स्ट बहुत इंपोर्टेंट यूजफुल वर्ड हेउचे for the time being बहुत फ्रीक्वेंटली मो यूज करे मो इंग्लिश रे तमे भी यूज करो बहुत इफेक्टिव इंग्लिश कहि पारिबो आउ ए वर्ड टी तुमको बहुत हेल्प भी करिवो सेटा होची फॉर द टाइमिंग एबे पई किछि भल ये लागोनी किंतु हिंदी रे फिलहाल के लिए मैं तो वीडियो बना रहा हूं एबे पई तो मोटी वीडियो बनौची हे रुद्र व्हाट आर यू डूइंग फॉर द टाइम बीइंग that time I would say yeah for the time being I'm making video yeah for the time being I'm making video देखो जेतेडे तुम इंग्लिश कहउछ ना गोटे फीलिंग्स टा गोटी गानो फीलिंग्स जेतेडे कहबे बहुत अट्रैक्टिव और इफेक्टिव लागीबो सेटा जेते बुझे yeah for the time being I'm not doing anything but yeah I'm thinking something to do but yeah what to do okay let's see what happens later in this way माने गोटे फीलिंग्स टा गानो तापरे हमर लास्ट बट नॉट लीस्ट सेंड व्हाट हेउची एट टाइम्स कभी कभी मेरा घर आता है सॉरी हिंदी जाने नहीं से केबे मो घर को आसे या से बेड़े मो घर को आसे ही कम्स टू माय होम एट टाइम्स ही कम्स टू माय होम एट टाइम्स मो बेड़े ता सहित कथा होए या आई टॉक टू हर एट टाइम्स मींस बेड़े हमारा लास्ट बट नॉट लिस्ट व्हाट हेउची आउट ऑफ द क्वेश्चन एट तुम बहुत सुनिता इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन इट मींस इम्पॉसिबल माने असंभव इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ओके आउट ऑफ द क्वेश्चन माने असंभव
In my opinion, it is out of the question for the time being. एबे पाए फिलहाल के लिए तो ये असंभव है. Okay, two words I use here. For the time being, it is out of the question. So let's consider it later. Let's think of it later. तापरे हमर आज लास्ट वर्ड हेउची जोटा कि मु एडी एंड करी वीडियो टाको काइना बहुत लंबा करिया को चाहूनी सेते में बहुत कम वर्ड से लिखिची से वर्ड हेउची far and near तुमको लागे तो far and near केमते एडे केमते लागछि far and near आ ए वर्ड far and near ओके far and near. So guys मु तुमको यार ओडिया कहनी बट किछि एग्जांपल दोची तुम मते यार ओडिया कमेंट रे लिखिना मते जणेबो जेमते गोटे एग्जांपल देबी yeah, in my wedding people had come from far and near. In my wedding people had come from far and near. Next example, yeah, many people had come from far and near. Many people had come from far and near. Don't pronounce far and near. What example ले देवा far, they had come from far and near. Okay, so it doesn't seem or it doesn't sound good, guys. So due to that, always try to make your R silent in every word. Far and near. Yeah, I know you are watching my videos from far and near. So guys, these are words for the day and hope you learned something new in my channel. So now I'm going to tell you that I'm requesting you guys, if you are new on this channel and learning something new from me, then don't leave without subscribing to this channel, guys. Do subscribe. मुझे दे रिक्वेस्ट करी सेते बेले तो किछि होबनी बट हम तुमको जल्दी लागु छी ए चैनल किछि वैल्यूएबल कंटेंट पाउछ जोडा कि तुमको हेल्प करू छी इंग्लिश सिखिया पई तो निहाती सब्सक्राइब करो चैनल को आउ कमेंट करे के भूलिबन काहे कि मु एटा तुमको लिखि दे एग्जांपल टे भी देले वीडियो को भलसे देखि छ तो बुझी पारिबो यार तुम ओडिया टे भी टिके लिखिया को ट्राई करिवो कमेंट बॉक्स रे. तो आज पाई एतिके तो नेक्स्ट थर माने नेक्स्ट टाइम आउ बहुत वर्ड्स गुडी आनिबे तो सेहि पे तुम चैनल को सब्सक्राइब करो देखिया पई तापर एक तुम चैनल नोटिफिकेशन पाई पारिबो आउ देखि पारिबो आउ तुम इंग्लिश को आउ टिके बेहतर बनै पारिबो. तो देखो गोटे ही मोर माने सॉरी कहबी सेति पई वीडियो क्वालिटी के लो होतबो कहिना मोबाइल भी को कॉस्टली नुह लाइट भी दीटा अछि आ गोटे ना दीटा लगले भलो हबो तो मु ता पई ट्राई करूची. तो फिर भी ट्राई करो गाइस जदि वीडियो क्वालिटी भलो नै क्वालिटी देखोनी कंटेंट देखो लाइफ रे भी सेमती जदि क्वालिटी पाख को जीवो ताले किछि नथिबो जेंति कि ब्यूटी को देखिबो जदि माइंड रे इनर ब्यूटी भलो नथिबो तो सेति में सब इनर ब्यूटी को देखो आ से इनर ब्यूटी होची मोर व्हाइट बोर्ड रे होची एटा होची इनर ब्यूटी आ एटा होची आउटर ब्यूटी को जाउनी इनर ब्यूटी को देखो जहां भी एडी होची कंटेंट रे आ किछि सिखिया को ट्राई करो. So guys, for today thank you so much for watching till here. Let's meet very soon in a very interesting and essential video. Thank you.